Ritu, how you feeling? I'm good. You remember after your last bout, your coach said he was going to give you $100. What you do with the $100? Um, I put in for my memory. I put this $100 for memory. So I lamination and put my draw for the memory. You just fought not long ago, less than a month. How's training been? Are you in shape? Did you have to do anything extra for this camp, or did you jump right back into training? Yeah, 1 month before is my fight, and after that fight, I feel good. I feel fit. So I am ready for the next fight. So now I am feel good and feel fresh. So I'm ready for this fight. Did you take any days off after that last bout? Did you get a nice meal, go watch some movies or something after that last fight? No, I start next day, Monday. I start my same training schedule because my fight is near 1 month after the last fight. My fight is for December, so I don't want to take rest. So I start training for Monday. Now, Ritu's been very lucky to fight multiple times this year. What do you think about that situation? Do you think fighting often is good for your career, or would you like to fight less, fight more? ऋतु पूछ रहे हैं कि आप बार बार आजकल लड़ रहे हो ये अच्छा है आपके करियर के लिए इतने बैक टू बैक जा रहे हो, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगी? बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा है और इससे अगर मेरे बैक टू बैक मैच हो रहे हैं तो मुझे एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस बढ़ेगा और मुझे मतलब कॉन्फिडेंस लेवल वो भी अप हो रहा है और जो मेरी मंजिल है मैं उसके स्टेप बाय स्टेप उसके करीब जा रही हूँ. Okay. Jenny, she says yes, these frequent matches will just help her in the course of her career because step by step she's inching closer towards her ambition, towards her goal, and she just sees as successful leading steps to her final goals and ambitions. Now, we talked a little bit in the last fight about Ritu wanting to show her striking a little bit more. In the last fight, she looked really good, had some good boxing stance. Head movement was there. How much better does she think she has gotten since then? And what was the process like in adapting her wrestling to MMA? Okay. रितु बोल रहे हो ना, आपका लास्ट फाइट में देखा है आपका कुछ अच्छे आपने टेक्निक्स यूज किए थे, तो आपका जो अगर कैसे आप बेहतर हो गए हो और आपका कैसे आपने अडेप्ट किया है बॉक्सिंग से एमएमए तक? लॉकडाउन के टाइम पे मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया, अपनी स्ट्राइकिंग पे काफ़ी वर्क किया है, तो इसीलिए मेरी जो स्ट्राइकिंग है वो लास्ट मैच में आपने देखी वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है. और रेसलिंग तो मेरा जो है, रेसलिंग मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो अगर उसमें बॉक्सिंग स्ट्राइकिंग और मिक्स हो जाए तो वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है स्ट्राइकिंग और बॉक्सिंग रेसलिंग का. अच्छा, और वो ये भी पूछ रहे हैं आप कैसे बेहतर हो गए हो आपके लास्ट फाइट से लेकर अभी तक में? लास्ट फाइट से लेकर अभी तक में कैसे बेहतर हो गए हो आप? अभी मेरी स्ट्राइकिंग फर्स्ट मैच में मेरी स्ट्राइकिंग इतनी अच्छी नहीं थी, वो मैंने रेसलिंग के उसके स्ट्रॉन्ग रेसलिंग के बलबूते वो फाइट जीती थी. लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे इस मैच में मैंने स्ट्राइकिंग यूज की है, स्ट्राइकिंग की है, तो मेरी स्ट्राइकिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है. ठीक है, ठीक. Jenny, she says that when she had first entered the world of MMA, she had relied largely on her boxing skills to win over an MMA fight. But however, during the course of time, she's just been focusing on her MMA skills to get better. Even, she's been working rigorously on her striking skills, and she's trying to hone her MMA skills with each and every fight. During the lockdown, especially, she's focused immensely on bettering her MMA skills, and it's just getting better, and she can see the growth for herself as well. Who has been the biggest influence on your striking development? Who has helped you the most? Yeah, Ritu, मेरे कोच जो हेड कोच है हमारे सीआर, उसने काफी मेरे लॉकडाउन के टाइम. क्या नाम है? सीआर.
ओके ओके हाँ कोच शियार ने मतलब लॉकडाउन के टाइम पे भी मेरी काफ़ी हेल्प की। वो वीडियो कॉल करते थे, उस टाइम पे मुझे बताते थे क्या करना क्या नहीं। और जो मेरे बॉक्सिंग कोच हैं, वर्ल्ड चैम्पियन है ड्रेन, उसने भी मेरे मतलब वो भी मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं डे बाय डे, मेरी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। ओके वो कैसी हेल्प करे आपके वो स्ट्राइकिंग में हेल्प कर रहे हैं। वो बॉक्स के वर्ल्ड चैम्पियन है, तो वो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करवाते हैं और मेरी स्किल को इम्प्रूव करवाते हैं। ओके सो वो बॉक्सिंग के आप बोल रहे हो है ना वो आप बोल रहे हो बॉक्सिंग के चैंपियन है ना हाँ, बॉक्सिंग चैम्पियन। Okay, huh. So Gianni, she says that her head coach has helped her a great deal. Her head coach's name is Shiar, and he's always been giving her some really helpful tips and really helpful guidelines on how she can win over, how she can keep getting better. And then she also credits or attributes her success to boxing champion Drain, who's helped her virtually to to use some of her skills or or to do better some of her skills, and she relies largely on these two people to keep getting better at each and every match. How important to you was the movie Dangal, and does that carry over into how you do in one and inspiring others? ओके हाँ तो ये जो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण मूवी था ये दंगल और आप कैसे दूसरों को प्रभावित करते हो और वन चैंपियनशिप में आप कैसे दूसरों को जैसे प्रेरित करते हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे इसका आंसर दूँ। हाँ अच्छा तो बोल दो ना कि आपका जीवन बता दूं मैं जैसे आपने प्रीवियसली बोला है आपके क्वेश्चंस ये क्वेश्चन के कैसे आपने जवाब दिया है वैसे बोल दूं मैं हाँ, हाँ। बोल दो रितु ये बोल दो ना कि आपका जो सत्य कहानी है वो बताया गया है हुँ। और फिर आप बात करो कि आपको कौन प्रेरित करता है एंड फिर आप बताइए कि आप जब वन में दूसरों लोगों से बात करते हो अन्य देशों के लोगों को आप वहां पे कैसे देश का नाम ऊंचा करते हो वो ओके, बता दो आप ओके। तो जैसे कि दंगल मूवी में जो चीज़ दिखाई गई है, मेरे पापा की और जो मेरी बड़ी बहनों को दिखाया गया है, वो बिल्कुल 99% वो रियल स्टोरी है। तो मैं अपनी बड़ी बहनों से काफ़ी प्रेरित हूँ और मैं उन्हीं से मतलब मैं उन्हीं को अपना आइडल मानती हूँ। और वन चैम्पियनशिप में आने के बाद भी मैं देखती हूँ कि मोस्टली फाइटर हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब वो बोलते हैं कि हमने आपकी मूवी देखी है, आपके पापा के ऊपर जो मूवी बनी है वो देखी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब दूसरे देश के फाइटर जो वर्ल्ड चैंपियन है जो वो मूवी के बारे में बात करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है Jenny, she says that the movie Dangal has actually portrayed the life of the real Ritu Phogat. It's actually very beautifully portrayed how she takes her inspiration from her sisters, from her dad. Okay, so it's been a very important milestone, um, so to say, because she thinks that sports stars, apart from cricket, ऋतु ये भी बता दो कि जैसे आप एमएमए को प्रमोट कर रहे हो वैसे यूजुअली आप जैसे बोलते रहते हो कि क्रिकेट की तरह हमको एमएमए भी वहां यस, पर यस, ये करना है तो ये मूवी से आपको सिर्फ और भी यस, प्रोत्साहित मिलता है आगे बढ़ने का ये बता दो यस, यस, हाँ so Jenny, she says that cricket is like religion in India, but the movie Dangal. So she says that cricket is religion in India, but the movie Dangal has actually put the focus back on some of the other leading sports that she wants to promote in India, and MMA happens to be one of them. So it's just truly inspiring. It's truly motivating to her because it rightly portrays the real life of a Ritu Phogat. How much her father and her sisters have actually helped her in her journey to MMA or to represent the country. So it's always been encouraging for her. It's been motivating for her. She says it's great to see some of the others who she meets at one championship, actually talk about the movie Dangal. If not anything, it just keeps it just keeps um reigniting or it just keeps her reminding that she's here for a larger purpose and that is to represent the country and it just feels great with the recognition she gets from some of her other peers or colleagues at one championship
So she thinks that, it's important for her to do well. And when someone asks her about the movie Dangal, she thinks that, it's just encouraging her to keep her focus on, and, to get into the game head on, strong on. Question here from Jim Barcelona of Miami Herald again. When you signed with One, did you feel like you had accomplished everything in wrestling, or was there more that you wanted to prove? ओके, वो बोल रहे हैं ऋतु कि जब आप वन में आपने आए थे, कि आपको लगता है कि आप रेसलिंग में सब आपने टान कर लिया था, कि आपको और भी कुछ प्रूव करना था दुनिया को? क्या एक बार फिर से बताना? वो बोल रहे हैं जब आप वन को आपने साइन किया था, ठीक है, तभी आपने सोचा था कि रेसलिंग में आपने सब हासिल कर लिया है, कि आपको और भी प्रूव करना था दुनिया को? नहीं, मेरा रेसलिंग में जो करियर था वो काफी अच्छा चल रहा था, और अभी 2020 ओलंपिक भी आने वाले थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने वन चैंपियनशिप ज्वाइन किया। तो मेरे पास एक मैं बचपन से ही मतलब काफी टाइम से मैं ये मिक्स मार्शल आर्ट देखती थी और मुझे ये पसंद था, तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी, तो मैं उस टाइम पे इसको गंवाना नहीं चाहती थी, इसको मिस नहीं करना चाहती थी, तो मैंने अपना रेसलिंग को छोड़कर मिक्स मार्शल आर्ट ज्वाइन किया। जब आप अपने करियर के सबसे ऊपर पे थे तभी आपने किया हुआ था ना ये? जी। Okay, so Gianni, she says that when this opportunity had come to her, when the one opportunity had come to her, she was still faring well in her wrestling career. She was still at the top of her game, so to say. And Olympics 2020 was just round the corner. However, she had been following MMA for a very long time, and she wanted to try her hand at MMA. So when this one championship opportunity came to her, she could not help but grab the opportunity and get going on it. So it's not like she want to prove something to the world, but it's just that she'd been contemplating moving to MMA for a long time, and the opportunity just provided her the reason to do it at the right time. Thank you for that. Question here from Leon Jennings. With everything going on this year, if you can end the year with 3 wins inside the one circle in 2020, will you look at it as a good year for you? तो ये बोल रहे हैं आपने 3 बार अपने अपोनेंट को हराया हुआ है, so ये साल आपके लिए कितना उम्दा हुआ है? बिल्कुल, ये साल मेरे लिए अच्छा रहा कि मैंने इस साल में अभी 2 फाइट जीती हैं और अभी मेरी नेक्स्ट फाइट है, तो मैं चाहूंगी कि उसको जीत के साथ मैं इस साल के अंत को जीत के साथ फिनिश करूं। Okay, Ginny, she says, yes, definitely this has been a great year for her. She's already had her hat-trick win at MMA so far. And she just says that, if she has one more feather in a cap, or she's got one more win in, in her portfolio, that will just help her. And yes, definitely it's been a great year for Ritu Phogat. From an MMA point of view, yes, it's been a turning point for her because she's had some of her milestone wins in this year. Question here from Matthew Scott of South China Morning Post. What's the biggest challenge to you so far since making the transition into MMA? And what went through your mind the first time you got punched in the face? हाँ, ऋतु बोल रहे हैं कि बिगेस्ट चैलेंज क्या था आपने जब MMA किया था, और आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आपने पहली बार मुंह पे मुक्का पाया था? बिल्कुल, जब मैंने रेसलिंग से मिक्स मार्शल आर्ट ज्वाइन किया तो मुझे मतलब काफी इंटरेस्टिंग लगता था ये गेम, तो मुझे कुछ भी करने में इसमें मजा आता था। और मैं जब मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ी बहुत मतलब पेंसिल वगैरह से डरती थी, लेकिन बाद में मैंने उस चीज की ट्रेनिंग की और फिर मैं अब मेरे ये है कि हाँ, कोई मुझे पंच मारे तो ताकि उससे मुझे और भी गुस्सा आए और मैं और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाऊं। ठीक है। So Jenny, she says, yes, initially when she began, the blow actually gave her a real blow on her face, yes. But eventually she's trained herself, she's gotten better at it. And now I think she just takes it in her stride, where she uses that to channelize her aggression in the one circle. And she says that, now each time she gets a blow or she gets a punch on her face, she just gets more aggressive. It just helps her perform better.
and to take down on her opponent. Talking about the matchup coming up this Friday, Jomari Torres has some pretty good stand-up. Would she say that this is the toughest striker that she's faced so far? ऋतु वो बोल रहे हैं क्या आपकी अपोनेंट जो है जमाई टोर्स वो बोलेगी कि ये आपका सबसे ज्यादा सबसे टफ कंपटीशन रहा है, क्या वो आपके बारे में वो कह सकती है? मुझे अपोनेंट के बारे में बताना है। हाँ, वो आपको बताना है कि अपोनेंट आपको देखकर कह सकती है कि आप उसकी सबसे टफ कंपटीशन रही हो। मैं यही कहूंगी कि जो मेरी अपोनेंट है वो एक बहुत अच्छी फाइटर है, मैंने उसके मैच भी देखे हैं। वो काफी मतलब उसका जो स्टैंडिंग गेम है वो काफी अच्छा है, और मैं यही कहूंगी कि ये बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है हम दोनों के बीच में। ठीक है, आपने भी जैसे उसके सब सीखे हुए है ना। हाँ, Jenny, she says her opponent, yes, is a very well-renowned champion, MMA champion, and Ritu is confident that she is going to have a fight that she can remember. She's going to have a memorable fight with her. And Ritu has also learned some of her weaknesses. Says that the viewers need to be tuned in to watch how exciting this fight is going to be, and how what a wonderful fight is this going to be. And yes, definitely her opponent will be able to say that Ritu Phogat is one of the toughest competition she's faced in a long time. Now we move into this next question by Leon Jennings of Asian Persuasion MMA. Do you think another dominant performance on Friday night will earn you a spot in next year's Atomweight Grand Prix? Okay, Ritu, Jenny, hello? Can you repeat the latter part of the question once again? Of course. Question again from Leon Jennings of Asian Persuasion MMA. Do you think another dominant performance on Friday night will earn you a spot in next year's Atomweight Grand Prix? Okay. ऋतु वो कह रहे हैं कि आपका ये अगर आपने बेहतरीन परफॉर्म किया ये फाइट में, तो क्या आपको क्या आपकी स्थान हासिल हो जाएगी, क्या आपको जगह मिल जाएगा ऑलरेडी जो नेक्स्ट एटमवेट ग्रैंड प्री आने वाला है उसमें? मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरी जो फोकस है वो यही है कि मैं पहले मेरा फोकस इस मैच पे है कि मैं इस मैच को जीत के और मतलब जो ग्रैंड प्रिक्स के जो टॉप 8 में हूँ उसके करीब जाऊं। Jenny, yes, she says yes, that his firstly her focus is to win the current match, and yes, her ultimate goal is to get closer to the top 8, to the set of top 8 finalists for the Atomweight Grand Prix. From the start of your career to now, how has your training routine changed since joining One? तो आपके करियर में बोलते हैं कि वन को जब से आप आए हो यहाँ पर ट्रेनिंग रूटीन कैसे चेंज हुआ है? ट्रेनिंग वगैरह तो मतलब थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो मैंने मतलब रेसलिंग टाइम पे भी मोस्टली मतलब ट्रेनिंग सेम ही रहती थी, और लेकिन इसमें यहाँ पे आके थोड़ी टेक्निक, जैसे इसमें रेसलिंग में सिर्फ हम रेसलिंग करते थे, यहाँ पे भी हम रेसलिंग भी करते हैं, स्ट्राइकिंग भी करते हैं, हम मुay थाई भी करते हैं, बीजेजे भी करते हैं, तो सिर्फ टेक्निक का ही थोड़ा डिफरेंट है, अदरवाइज ट्रेनिंग वही है। रूटीन सेम रहा है आपका? ओके। Jenny, she says her routine has pretty much been the same as compared to her wrestling days as well. However, there's been more focus on enhancing your techniques, enhancing your skills here. That's something that's been slightly different in her routine. She's been focusing more on striking, Muay Thai. She's sort of doing an amalgamation of a lot of other things as opposed to her wrestling routine. And yes, and I think she's been focusing more on and yes, she says that she's been focusing more on striking, on Muay Thai, and a couple of other things along with all that she did during her wrestling days. And overall, the routine has pretty much remained the same. Without giving away too much of your strategy, tell us how you think this fight will go. Do you have any predictions? रितु, आपका कोई है प्रेडिक्शन है? स्ट्रैटेजी मत दो ज्यादा, बट कोई प्रेडिक्शन है आपका? मैं बस यही कहूंगी इस मैच में कुछ मतलब कुछ अलग देखने को मिलेगा। ओके, एंड
क्या लगता है कौन जीतेगा? वो तो मैं मैच मैच पे मतलब वहाँ पे रिंग में ही पता चल सकता है। मैं वहाँ पे जाकर अपना 110% दूंगी। So Jenny, she says that this match is going to be different for viewers to watch, and may the best woman win. And yeah, that's about it. She says it's only the viewers who will be able to see what's different during the match this Friday. She cannot divulge further on. She can only say that, come in and let's see Ritu Phogat in action. That's all from us. Thank you so much for your time, Ritu. Thank No, you. you look like you need to get some rest. I'll let you go. Thank you.